इंडियन आर्मी को कहा जाएगा अगर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी, तो हम जो है वो कश्मीर को वापस ले लेंगे। ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है, और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए। भाई इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अच्छी इकोनॉमी चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े पॉपुलर हैं। बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है एंटी मुसलमान है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज कि इंडिया का जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो पाकिस्तान है, उसके साथ तो मसाइल अच्छे नहीं है इंडिया के, ठीक है। सो कभी वो हमें एफएटीएफ में फंसा के रखने की कोशिश करते हैं, कभी जो है वो और किसी चीज में कहते हैं कि यार इनको जो है नहीं निकलने देना, इनके जो है ना वो अपना अपना पर्सनल एजेंडा सेटल करना है। आप समझते हैं कि एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात करना जी, कि ग्लोबल साउथ में जितने ममालिक आते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, बाकी भी एशिया पैसिफिक में, उधर लैटिन अमेरिका में भी, सबकी बात करना चाहता है, लेकिन हाउ कम जो है वो इंडिया वो पाकिस्तान के साथ इतना जो टफ एनवायरनमेंट रखा हुआ है, और जैसे स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ग्लोबल साउथ की जब बात करनी पड़ेगी तो सबकी बात करनी पड़ेगी? फिर ये नहीं है कि आप एक मुल्क को निकाल दें, एक के ऊपर टफ लाइन लें, और फिर इसी तरह छोटे मोटे और जो मुल्क हैं, जैसे कभी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। सो इंडिया को वो एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी फॉर टेकिंग दैट लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंडिया इज एट पार और इज ट्राइंग टू कम्पीट विद चाइना व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, और इसको पोलिटिसाइज करने में भी इंडिया ने अपना ज्यादा रोल प्ले किया हुआ है। सो आप इसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान के साथ टफ लेकिन वैसे एजेंडा ग्लोबल साउथ का लिया है? पाकिस्तान ने कहा एनवायरनमेंट का मसला है, इंडिया बोले ही नहीं उसमें, तो इसमें भी जरा काइंडली थोड़ा सा एजुकेट करें। देखिए, we look at Pakistan as a destruction, as a distraction. Sorry, destruction भी वैसे दिल गलत की बात सामने आ गई कि डिस्ट्रक्शन भी हो जाए इनकी, तो है destructive power भी कह सकते हैं वैसे, but we do look at Pakistan as a distraction. We don't look at Pakistan as a player. You may not like my opinion, but I'm just trying to echo what we hear here in New Delhi. जी जी, उसके जो बहुत सारे जो उसकी वजूहात हैं, वो आई थिंक वो आपको अंदर झांकने की उसकी ज़रूरत है, कि अगर आपको अफ़गान तालिबान जो एक टाइम पे आपकी इतनी बड़ी एलाइज थी, अगर वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो आई थिंक it's a bit hard on India on your part to expect the Indians to take you very seriously. ठीक है, you got to really put your house together. एंड पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये भी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब आप ये कहते हैं कि रीजन की बात करते हैं। आई मीन, पाकिस्तान इज वन कंट्री विच लिटरली स्टोन वॉल्ड सो मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ सार्क। लास्ट जब उनका समिट था, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने शर्त लगा दी कि जी आप तालिबान को बुलाएं और आप जो है मेक श्योर कि कोई भी जो अर्स्टवाइल अफगान हुकूमत जो थी उसका कोई मेंबर वहाँ नहीं आना चाहिए। व्हेन यू डोंट हैव योर प्रायोरिटीज सॉर्टेड, I think the world is not going to sit and waste time on you. I think that realization has dawned upon India that this is a distraction. Leave them alone. We have issues with them, outstanding issues with them. We will solve them at our own discretion. Talking about global South, I know India is making efforts to be the emerging face of the global South. And the world is really buying that. You cannot just say कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दुनिया ऐसा नहीं समझ रही है. See, one reason is also that the Chinese are so unilateral in their approach, and India as a country is very 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 multilateral, and we believe कि जो हमारा जो खिता है, there is so much world population which is living in this part of the world. तो हमारी जो representation है overall, जो अगर आप देखें वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखें जो at the forums like the UN and UNSC, so of course we have our own vested interest and we have big goals ahead. And आप ये भी देखें कि जब दुनिया पूरी जो है एनर्जी क्राइसिस से लड़ रही है, फूड क्राइसिस से लड़ रही है, इंडिया में दोनों क्राइसिस नहीं है। वी आर लिटरली द फूड क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड. And even as the chairperson of the G20, the chair of the G20, we have our priorities pretty sorted here. तो ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, सो प्लीज कम, वी आर गेस्ट, नो प्रॉब्लम. हमने
आपने बात की इंडिया के कोई ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं या नेबर्स के साथ, तो आई कांट थिंक ऑफ वन कंट्री जिनके पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें, इंडिया हैज़ बेटर रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दैन पाकिस्तान. We have invited the Bangladesh, the Bangladeshis to the G20 summit as well. They are an invitee, and the world for a very long time has been ignoring Bangladesh as a very unimportant country. But there are literally like 160 million people living there, and they are growing at a faster pace than India on so many parameters. So we take them very seriously, and we respect the fact that the Bangladeshis also kind of exercise their own strategic autonomy when it comes to so many things. But yes, the countries which are pretty much towing the line of the Beijing, and countries who have been trapped by the Chinese and they told their agenda, we are better off without them, and we would not entertain them, beyond a certain extent. बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है इसी तरह की जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज व्हाट इस्लामाबाद थिंक्स कि द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड इंडिया, और इंडिया अगर अपनी वो एजेंडा लेके चलना चाहता है तो वो चले, उसको हक है ऑब्वियसली। इफ़ इंडिया अगर चीज़ें समझता है कि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों से, अब अमूमन तो पाकिस्तान और इंडिया कहीं भी ऐसे किसी मल्टीलैटरल फोरम पे है ही नहीं है, अदर देन साथ दो ही बड़े, एक ही बड़ा फोरम था, एससीओ तो वर्क कर रहा है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया बड़े आराम से काम कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया का वैसे भी देयर इज़ नथिंग टू मैच इन टर्म्स के ना हमारा कोई कारोबार हो रहा है ना बिजनेस हो रहा है, सो वी आर कम्प्लीटली अलूफ एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ रहा है ना इंडिया को फ़र्क पड़ रहा है, डिस्पाइट इंडियाज़ प्रेशर और बड़ी कोशिश की FATF में रखने की, लेकिन पाकिस्तान केम बिकॉज आउट ऑफ द FATF एंड सो मैनी सो, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन मेरी जो डिस्कशन थी वो ये थी कि व्हेन यू गो फॉर एक ग्लोबल एजेंडा रखते हैं, देन यू हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एंड आई थिंक इफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि नहीं हमने पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करना है, आई थिंक इट वोंट अफेक्ट इवन इन पाकिस्तान बिकॉज हमारी डिपेंडेंस नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती, बॉर्डर खुले होते तो और चीज़ होती, वो कि मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली इंगेज हों, आना जाना हो, लेकिन वही एक बात है कि शायद मेरी एक ज़ाती ओपिनियन भी ये है, दिस इज आई वाज शेयरिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि if Pakistan has to talk with India, Pakistan needs to be economically strengthened, politically stable. That's the only way आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत हो तो जिससे मर्जी बात करें, इंडिया का जिससे भी बात करेंगे। और देखिए कारोबार इज इम्पॉर्टेंट, बिजनेस इम्पॉर्टेंट होता है, आप किसी से भी कारोबार कर लेते हैं अगर आपको बुरा भी लग रहा हो तो। इफ़ यू ऑफर समथिंग एंड इफ यू गेट समथिंग इन रिटर्न तो ये करना चाहिए। बट एनी हो, इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम इंडिया। देखिए, आपको सब पता है कमर, आपको एक्चुअली सब मालूम है, बट आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपको वो बताए। द वे यू कंक्लूडेड, यू प्रीटी मच नो एवरीथिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद योर कंट्री, यू नो इट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान का तो पता है ना क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं भी कुछ समझता रहता हूँ, इधर उधर ध्यान रखता हूँ, थोड़ी बहुत ही चीज़ों पे समझने की जी, बट कोशिश करता हमारी जो प्रायोरिटीज है वो बिल्कुल अलग है ना। अब ये भी तो होता है ना, हूँ। आपकी प्रायोरिटीज भी तो कहीं पे आके कुछ सिनर्जीज होनी चाहिए ना। ठीक आपकी है, प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू बी bridging that gap between the developed nations and the developing nations. We are projected to be having the fastest GDP growth among all the G20 countries. तो ऑफ कोर्स आवर प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट, एंड हमारे जो मसले भी हैं वो आपसे बिल्कुल अलग हैं। तो ठीक हर इंटरेस्ट अपना, हर नेशन अपना इंटरेस्ट देखता है ना। हमारे जब प्रॉब्लम्स ही बिल्कुल अलग हैं, आपके प्रॉब्लम्स बहुत ही अलग हैं। आपके प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आपका जो आर्मी चीफ है वो हाफिज कुरान है कि नहीं है। हमें नहीं, यहाँ पे ये बोलते पाकिस्तान हैं का कि हमारा प्रॉब्लम आर्मी नहीं है। चीफ कौन है। ये नहीं, ये बट ये you ये are too, ये you आपकी too, ये no, आप no, 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 ये Kamar, hear कॉन्फ्लिक्ट me out. ये You कॉन्फ्लिक्ट है। kind of try to judge every situation based on religion. See, that's not how it works, right? नहीं नहीं नहीं, Religion is a आप part of इसको, your life. It cannot be made into a foreign policy or your way of life. That's not how it works. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये क्योंकि आपकी आप अगर इंडिया सोच को बड़ा फॉलो करते हैं तो हम भी तो करते हैं ना थोड़ा अच्छी बहुत। बात। तो हम छोटे मोटे एनालिस्ट हैं,
बट थोड़ा बहुत तो हम भी फॉलो करते हैं ना, हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से, किस अप्रोच से चीजों को जज किया जाता है, कि आर्मी चीफ के लिए भी लोग किस तरह की चीजें एक आर्मी चीफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा जनरल हो वो मतलब टफ डिसीजंस ले सके, ही इज डिसाइसिव। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको किसी रिलीजन का नो हाउ है नहीं है। वी वांट देम टू अंडरस्टैंड जियो स्ट्रैटेजी बेटर, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो, today if you look at it, geostrategy, geopolitics, geoeconomics, everything is so intertwined. आप अगर सोचेंगे कि आप एक चीज को पकड़ के आगे चलते रहेंगे तो सॉरी, आई मीन द वर्ल्ड विल जस्ट मूव ऑन एंड यू विल स्टिल बी